अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह. So we will be studying today. हमारे पास दो टेबल होते हैं EMP और DPT. ये दो फेमस टेबल हैं. इनसे मतलब जो भी बुक आप देखेंगे करीब करीब उसमें कुछ टेबल्स की एग्जांपल्स यूज होती है. उनमें से एक टेबल है EMP एम्प्लॉयज और डिपार्टमेंट टेबल. सो दिस इज इन योर लाइव सीक्वल जो लाइव एसक्यूएल ओरेकल की वेबसाइट है. और देयर आर मेनी ट्यूटोरियल्स अवेलेबल. उन्हीं में से एक ट्यूटोरियल ये भी है जिसमें आपका EMP एंड DEPT टेबल होता है. सो हम आज की जो क्लास है इसमें देखेंगे कि EMP और DEPT ये कैसे हम क्रिएट करते हैं. इनको इसी ट्यूटोरियल को हम फॉलो करेंगे. दिस इज द ट्यूटोरियल. जब आप लाइव एसक्यूएल में जाएंगे, व्हेन यू ओपन द लाइव एसक्यूएल यू विल सी आपके जो लेफ्ट हैंड साइड से ट्यूटोरियल्स होता है या कोड लाइब्रेरी है. यू कैन गो टू द कोड लाइब्रेरी एंड यू कैन फाइंड दिस. पहला तो है इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल जो हमने परसों देखना कि अभी पूरी तरह नहीं देखा. EMP एंड DEPT. सो जितना हमने अभी तक पढ़ा है उस हिसाब से वी कैन run this EMP and DEPT. ठीक है. दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्रिप्ट. सो वी विल run this code one by one. ठीक है. There are many kinds of in this code library there are some tutorials which are mentioned here as tutorial green color में tutorial, and there are some that are mentioned as script यहाँ रेड कलर में. इन ट्यूटोरियल जब आप ट्यूटोरियल चलाएंगे तो आप एक एक करके इसमें क्वेरी इंसर्ट कर सकते हैं. लेकिन स्क्रिप्ट में पूरी क्वेरीज दी होती है, उनको कॉपी पेस्ट करके चलाना पड़ता है. ठीक है. सो सम ऑफ देम हियर आर स्क्रिप्ट्स एंड सम ऑफ देम आर ट्यूटोरियल्स. ठीक है. सो वी आर टुडे focusing on this EMP and DEPT. यम छ zı टेबल आसान ऐसे classic Oracle tables ही बनवाना. They will have this. So हाँ माइक पे ऊपर बात. ठीक है. So let me go to my session SQL worksheet. So I am here right now. We don't have any tables. So we'll see जो EMP and DEPT है. So we have one table called DEPT or the department. ठीक है. So how many columns does this table look? क्या लगता है आपके कितने कॉलम है इसमें? अब इसमें जो जो नई चीज आएगी वो हम साथ साथ पढ़ेंगे वो क्या होता है. इसमें एक कॉलम है DEPT नो यानी डिपार्टमेंट नंबर. द सेकंड इज डिपार्टमेंट नेम. द थर्ड इज लोकेशन LOC एंड फोर्थ इज समथिंग दिस. ये देखेंगे इसका क्या मतलब होता है. सो लेट अस कॉपी दिस कोड एंड लेट अस पेस्ट इट इन आवर सीक्वल. ठीक है. सो व्हाट वी आर डूइंग क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट. First department number, right? But what does this mean? Can somebody explain number 2,0 का क्या मतलब होता है? कोई बता सकता है क्लास में? शाबाश. Are you able to unmute yourselves? Yes. Can somebody try to explain? कहाँ है क्या कोशिश करे कम से कम. शाबाश. Hello. And the second is D name. It's a varchar 14 and LOC varchar 213. So basically, when we say DEPT no is a number, it is a 2-digit number. It doesn't have any points. It has 0 points. Decimal value उसके 0 है. So इसमें देखने लायक ये है जो 5th लाइन में है constraint P के डिपार्टमेंट प्राइमरी की डिपार्टमेंट नंबर. सो राइट नाउ हमने अभी तक 3 कॉलम्स क्रिएट किए लेकिन देन देयर इज समथिंग न्यू. दिस जो हमने अभी तक क्लास में नहीं देखा. व्हाट इज दिस? दिस इज हाउ वी क्रिएट कॉन्स्ट्रेंट्स. हम कॉन्स्ट्रेंट्स क्रिएट करते हैं. अदफर आप एवरीवन को मैसेज लिख रहे हो. यू हैड टू राइट टू समबडी बट यू हैव राइटिंग टू एवरीवन. ठीक है. पाई न चकिए पाई न चनिकिए tilkachu classrooms. So is Adfar our student?
Okay. You don't have to, when you use the chat box of Zoom, you have to be careful not to write to everyone. You have to write to the friend जिसको आपको लिखना है. अफसोस. So constant छ आसान इले इसका टेबल छ बनावान आत्म छ मैं वो तो एक क्या चीज आसान इमन बनान छ constant से मैं रुकावान छ डेटा गलत डेटा एंटर करने निश जन एस पर रात अक constant छ आसान तछ वना not null बया तम से छ गसान अगर इस कुने not null थाओ constant ते तम से छ नु तथ मज हकान खाली वैल्यू असित किहिन इथे कन छ बया constant आसान unique ठीक छ I just want your 1 second एक म्यूट करूंगा मैं कुछ देर हाँ सो द कांस्टेंट हमने देखा यूनिक होता है नॉट नल होता है ऐसे देखा यूजुअली इस पर डिफरेंस इफ यू वांटेड टू कीप इट एज यूनिक हम लिखते हैं यूनिक ठीक या इस नॉट नल आसान था उनका ऐसे लिखा है नॉट नल तम से तो साथ कांस्टेंट गसा अख ऐड योस यूनिक बना या उस नॉट नल बना ठीक है ते विनकेस छना वी हैव नॉट we have named a constant we have kept a primary key there are many things in this line that is in this we are creating 3 columns and we are creating a constant named pk department constant का नाम भी होता है so we are creating a constant जिसका नाम है pk underscore department this constant is of type primary key and this primary key acts on this column यानी department number ये जो DEPT number है what we mean by this line बनावा वी आर मेकिंग दिस एज अ प्राइमरी की प्राइमरी की क्या होता है एक टेबल में एक की होती है जिसको कहते हैं प्राइमरी की उससे क्या होता है वो यूनिक भी होती है और नॉट नल भी होती है ऐसे वो यूनिक भी होती है एंड नॉट नल भी होती है इस आसान ये ने डुप्लीकेट गसित किए if somebody enters a department number he cannot enter it twice that means it's unique and somebody cannot keep it empty that means it is not null so we can make it as a primary key अगर हम लिखेंगे rather than unique और not null के बदले primary key so this also means unique as well as not null ठीक है but here we have not written column के बाद primary key because हम चाहते हैं इस primary key का कुछ नाम भी हो so if we want to name a constraint we have to create it like this ठीक है इसको बोलते हैं कॉलम लेवल कांस्टेंट तो हम इसको अलग लाइन में लिखते हैं कांस्टेंट फिर कांस्टेंट का नाम फिर क्या है कांस्टेंट किस टाइप का है प्राइमरी की है यूनिक है नॉट नल है या क्या भी है किस कॉलम पर ये कांस्टेंट काम करता है सो we are creating a constant pk department which is basically a primary key constant and it works on department number right so we run this script and it will create a table called DEPT. So you can see that the table has been created with 3 columns and the first column has a constant that it is a primary key. Then we will create another table called EMP. Let's copy this and explain key table kya hai. Okay, now this is a table called EMP. So what is this table then? EMP table है ये क्या करता है इसमें क्या क्या options है so let us see. This table has first EMP number. It is a number 4-digit number. Zero का मतलब है it doesn't have any decimal. Decimal point के बाद इसमें कुछ नहीं. They could also have written int, but for the sake of continuity हर जगह number use करते हैं 4,0 करके. Int भी लिख सकते थे, but it is better इस तरह से हम digit specify कर सकते हैं कितने digit वाला. तो 4 digit वाला EMP number है. फिर हम नाम है employee का नाम. This table will have information about the employees. So job है मैनेजर है मैनेजर का नंबर व्हाट इज द जिस तरह एम्प्लॉय नंबर है सो एवरी एम्प्लॉय इज अ नंबर 101 102 103 सो इस एम्प्लॉय का कौन मैनेजर है उस मैनेजर का क्या नंबर है सो दिस इज मैनेजर सो हायर डेट दिस हैज अ टाइप ऑफ डेट
ये किस दिन इसको हमने ज्वाइन करवाया था अपने ऑर्गेनाइजेशन में. सो दिस डज नॉट हैव अ डेटा टाइप एज अ var char और अ नंबर. इट हैज अ सेपरेट डेटा टाइप, इसका नाम है डेट. डेट एक सेपरेट डेटा टाइप होता है. देन इज सैलरी. सैलरी इज अ नंबर बट नाउ इट्स नॉट समथिंग कॉमा जीरो, इट इज 7,2. यानी इसमें 2 डिजिट जो है वो डेसिमल के बाद भी आ सकते हैं. और सी कमीशन, ये कितना कमीशन कमाता है. अगेन इट इज इन पॉइंट्स, 2 डिजिट डेसिमल के बाद अलाउ रखे हैं हमने. डीईपीटी नंबर, ये किस डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है. नाउ दिस डीईपीटी नंबर इज अ फॉरेन की. इससे पहले जो हमने टेबल क्रिएट किया था डीईपीटी, ये उसको रेफर करता है. यानी वहां हमने डिपार्टमेंट नंबर रखा था एक कॉलम. अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे देंगे उस डिपार्टमेंट में किस डिपार्टमेंट में ये काम करता है. अगर वहां पे हमने 20 डिपार्टमेंट रखे हैं, एक का नाम है 1 2 3 4 5, तो उनमें से किस डिपार्टमेंट नंबर पे यहाँ पे काम करता है. सो दिस इज दैट, दिस कॉलम is linked to that, but we will need to link it using a constant. So we create two constants in this. First, we create a constant, a primary key on EMP number column. EMP number column चाहिए. So we have created a primary key here. Go awk. You're going to take in this round. इससे पहले DEPT नंबर प्राइमरी की बनाया था पुराने टेबल में, इसी तरह हम इस टेबल में EMP नंबर बनाते हैं. हो गया. अब एक और इसमें कांस्टेंट है जिसको फॉरेन की बोलते हैं. यानी इस टेबल का कोई कॉलम दूसरे टेबल के किसी प्राइमरी की कॉलम के साथ लिंक्ड है. यानी इस टेबल का कॉलम है डीईपीटी नो. ठीक है, या टेबल कॉलम डीईपीटी नो. ये वी वांट टू लिंक इट टू डीईपीटी के पहले वाले कॉलम के साथ. फॉर दैट वी क्रिएट अ कांस्टेंट, अ फॉरेन की कांस्टेंट. ये भी हम क्लास में जब आएंगे इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे. फिलहाल के लिए आप ऐसे ही याद रखो कि फॉरेन की होता है कि हमारे टेबल का एक कॉलम दूसरे टेबल के किसी कॉलम के साथ लिंक करना है. इसका क्या फायदा है ये बताएंगे इंशाल्लाह जब आप क्लास में आएंगे. ऑफलाइन क्लास में आपको ज्यादा, लैब में आपको समझ आएगा. So we take this DEPT number, we create a foreign key, just like we created a primary key. ये देखो यहाँ तक अगर देखें ना, ये दोनों करीब करीब सेम है. फर्क है इसका नाम, पी, ये नाम अलग है, इसका नाम अलग है. और ये प्राइमरी की है, ये फॉरेन की है. ये ईएमपी नंबर पे काम करती थी, ये डीईपीटी नंबर पे काम करती है इस कॉलम पे. दिस कॉलम रेफरेंसेस सम अदर कॉलम. सो इसके साथ लिखा होता है इट रेफरेंसेस, ठीक है, डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नंबर कॉलम को. सो इट रेफरेंसेस अनदर टेबल विद, जिसका कॉलम होगा डीईपीटी नो. सो दिस लाइन क्रिएट्स अ फॉरेन की, and this line it creates a primary key, right? So let us run this query. This will also let us run the whole query. This will create this table also. अब हमारे पास दो टेबल आ गए, एक डीईपीटी और दूसरा ईएमपी. ठीक, यहाँ तक कोई सवाल. सर ये है ना, ये पी के ईएमपी और कांस्टेंट के बाद बाद में, हम्म. सर ये जरूरी होता है ये इसका ये ईएमपी लिखना है, कुछ और नहीं दे सकते हैं इसके बदले? ये कांस्टेंट है या ये वेरिएबल है क्या? ये आप कह रहे हैं हाँ, ये समझ ही नहीं आ रहा है। ये वेरिएबल है. ये जैसे आप सी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल का नाम लिखते हैं, वैसे ही ये इसका नाम है. या आप इधर कुछ भी लिख सकते हैं, आसिफ, इरफान, कुछ भी. बट दिस इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, नेम ऑफ द प्राइमरी की. दिस विल बी यूज्ड अगर कल को हमें चाहिए इसमें प्राइमरी की में कोई चेंज करना. सपोज वी वांट टू चेंज दिस प्राइमरी की टुमारो, वी वांट टू डिलीट दिस प्राइमरी की, then if we have the name available we can delete it easily. Otherwise it will be difficult to delete a constant. जैसे ईएमपी नंबर है ना वेरिएबल का नाम, कॉलम का नाम, ये हम कुछ भी रख सकते हैं. इसी तरह ये भी नाम है. ठीक अब है ये सर। एक इन्होंने रखा है ये एक कन्वेंशन कि अगर प्राइमरी की है तो उसको ऐसे रखना चाहिए, पी के फिर अंडरस्कोर फिर किस टेबल की प्राइमरी की है. इसी तरह अगर फॉरेन की आप बना रहे हो तो कन्वेंशन है कि उसको लिखें आप पहले एफ के फिर अंडरस्कोर फिर किस कॉलम की फॉरेन की है. सो दिस इज अ कन्वेंशन बट यू कैन कीप एनीथिंग हियर. ठीक, और कोई सवाल. नो सर। हम देन एक से ज्यादा फॉरेन की रख सकते हैं, हाँ, एक से ज्यादा प्राइमरी फॉरेन की. की, एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं रख सकते, एक से ज्यादा फॉरेन की रख सकते हैं. एक टेबल में प्राइमरी की सिर्फ एक होती है, एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं होती. फॉरेन की अलबत्ता एक टेबल में बहुत हो सकती है. सो दिस इज an insert command. Now we are inserting data.
So this is insert into DEPT. As we saw, 3 कॉलम है DEPT में, उनमें वैल्यूज, डिपार्टमेंट नंबर में डाला हमने 10, डी नेम में डाला अकाउंटिंग, लोकेशन में डाला न्यूयॉर्क। ठीक है, ये टेबल्स आपकी बुक्स में अक्सर मिलेंगे आपको, तभी मैंने इसका थोड़ा एग्जांपल दिया ताकि आप समझ में आए, बुक से आप पढ़े तो ये मुश्किल ना हो समझ में। DEPT नंबर 10, डी नेम अकाउंटिंग लोकेशन, ये सिंगल कोट्स में है, एज यू कैन सी। New York is also in single quotes, but this 10 is not in single quotes. Why? Because this is a number. These two are varchars. So run this, one row inserted. Fine. इसी तरह we'll take another. ये simply copy paste करके we can paste, we can run. ठीक है, एक और row insert हो गया। इसी तरह they have inserted many departments here. You can run this whole script at once at your home if you want. But here now, since we are doing step by step, so we'll do step by step. All right. So these are now 4 departments that they have created. Now, if I write select star from department, we'll have 4. Okay. If we write like this, we'll have 4 departments here. As you can see, we have now 4 departments: accounting, research, sales, and operations. This has department number 10, 20, 30, 40, and these are the locations of the departments. Okay. Now we will put some data into the employees table. Okay, so this is an interesting one. Let's copy this and see what this means. Okay, insert into EMP. Now, as Utanis is DEPT tables में insert करा. Now we are trying to insert into EMP values. So see the difference. इससे पहले जब भी हम DEPT टेबल में insert कर रहे थे, यहाँ पर आपने देखा DEPT के बाद लिखा था DEPT नो, डी नेम, LOC, कॉलम्स दिए थे किस कॉलम में क्या डालना है। जब फिर दूसरी बार हमने कमांड यूज की थी, यहाँ कॉलम नहीं दिए हैं, तो मैंने आपको बताया था पिछली बार, ये 2 तरीके हैं। आप इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। इस तरह अगर आप करें तब आपके पास थोड़ा ज्यादा कंट्रोल होता है, यानी आप चाहे तो पहले नाम, फिर नंबर, फिर लोकेशन डाल सकते हैं, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं मेंशन करोगे यहाँ कॉलम, तब आपको उसी ऑर्डर में डेटा डालना पड़ेगा जिस ऑर्डर में आपने डेटा क्रिएट किया है टेबल। इसी के चलते EMP में इन्होंने शॉर्ट में टाइम बचाने के लिए इंसर्ट इनटू EMP सीधा लिखा है। नाउ वी हैव टू इंसर्ट ऑल द वैल्यूज दैट EMP में है। So let us first describe this EMP. Okay, so we see DESC EMP. I'll run this query only. So this is EMP. इसमें EMP number है, इसमें EMP number, e-name, job, manager, hire date, sal, commission, department number. So these are the different things in EMP. ठीक है, so let us see now. So values, first query में enter होता है 7839. So this is the employee number 7839. We are entering 783 employee number में 7839. And e-name we are entering King. Okay, the name of the employee is King. The job is that he is the president. Okay, who is his manager? What is the employee number of the manager? Because he is the president, he doesn't have any manager, so we keep it null. Note that we have written NULL. So इसमें कोई नहीं जाएगा. It will enter a null value because the boss has no boss. Boss के ऊपर कोई boss नहीं. Then we have an important thing here. Hire date. At what date did he join? This is an interesting thing. What we have used? We have used a function here. यहाँ पे rather than entering a simple date, like 1711 या कुछ इस तरह करके, we have used a function called toDate, to_date. This function, what it does, it converts a text in a given format into a date. यानी आप जानते हैं कि इंडिया में डेट लिखा जाता है, पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर, जबकि यूएस में पहले मंथ, फिर डेट और फिर ईयर लिखा जाता है। सो अक्सर एक कंफ्यूजन रहता है कि पहले डेट है कि पहले मंथ है। इसको खत्म करने के लिए यू यूज दिस टू डेट फंक्शन।
एंड व्हेन यू एंटर दिस टू डेट फंक्शन, इसमें पहले दिया जाता है डेट, फिर कॉमा करके फॉर्मेट, कि ये डेट किस फॉर्मेट में मैं एंटर कर रहा हूँ. सो यहाँ लिखा है टू डेट 17/11/1981, सो दैट इट मींस आई एम एंटरिंग डेटा इन DD MMYY फॉर्मेट. पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर. So this is a function, this is an additional step that has been used, which is not necessary. आप खुद सीधा डेट भी लिख सकते हैं, लेकिन इससे क्लैरिटी आती है कि ये 17/11 का मतलब है 17 इज द डेट एंड 11 इज द मंथ. अब आप बोलोगे 17 तो पता ही है ये डेट है, मंथ तो 17 हो नहीं सकता, कभी यहाँ पे कम भी हो सकता है 7/11, फिर कैसे समझ आएगा कि ये मंथ कौन है, डेट कौन है. तो इसलिए यहाँ पे फॉर्मेट बेटर है कि यू यूज दिस टू डेट फंक्शन व्हेनेवर यू हैव टू इंसर्ट अ डेट इनटू अ SQL or you have to read date from SQL Server Oracle. It is better to use the to date function. So it will convert this string into a date in this format and it will insert it. ठीक है, this is a to date function. And then we have the salary. Salary हमने इसकी रखी 5,000. The commission we kept at null, and the DEPT no. The department number we kept at 10. So he belongs to 10. Remember that this DEPT no was a foreign key. बाय फॉरेन की वी मीन ये 10 कोई डिपार्टमेंट होना चाहिए. अगर ये 10 कोई डिपार्टमेंट नहीं होगा, वी विल हैव एन एरर. लेट अस फर्स्ट सी दैट डिपार्टमेंट कि वहां पर क्या था. सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम DEPT. मैं सिर्फ इस क्वेरी को रन करूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम DEPT. You can see there are these departments 10, 20, 30, 40. So we are saying this Mr. King, he belongs to department number 10, which is accounting. So since this is a foreign key का मतलब है जब मैंने यहाँ 10 लिखा, the system will check क्या दूसरे डिपार्टमेंट में कोई 10 नाम का टेबल, 10 नाम का डिपार्टमेंट नंबर है. अगर है तब जाके मुझे ये एंटर करने देगा, अदरवाइज नहीं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एंटर हियर डिपार्टमेंट नंबर 100, राइट, बट 100 यहाँ कोई डिपार्टमेंट है ही नहीं. So when I try to run this query, it tells us that a value larger, not suppose, not, it is a precision error, sorry, 20 edition 90 with a department 90, 2 digit was not that. So you can see the error that is coming. It says integrity constraint violated. कौन सा integrity constraint? FK_ department number जो आपने constraint किया था वो violate हो गया है. That means parent key not found at line what वगैरह वगैरह वगैरह. That means मैंने department number 90 इसमें enter किया, 90 department exist ही नहीं करता है दूसरे table. Since this last column is a foreign key is linked to another table, so the database management system checks. Database management system check kara whether this 90 is there or not. This is part of data integrity. This is why database management systems are so important. So we are entering a wrong data. It is not allowing us to enter a wrong data because data creation के time पे data creation वाले ने एक constant रखा था. ये जो last का column है, it is a foreign, it is linked to some other table. There should be a department called 90. So now we will change it to department number 10 or 20 or 30 or 40. जो वहाँ पे departments है, 10 is there. So when I run this will run nicely. This will have no issues because 10 department है वहाँ पर. So now if we select this row, select star from EMP, we will see that we have one row. आराम से Mr. King का रो हमारे पास आ गया है और डेट भी माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से आ गया है. ठीक है, Any questions so far? कोई सवाल यहां तक? ओके, we'll enter now another employee. इसमें एक दूसरे एम्प्लॉय में एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी. दिस इज अनदर एम्प्लॉय मिस्टर ब्लेक. सो इसका डेट मैं यहाँ पर एंटर करूंगा मिस्टर ब्लेक. सो दिस इज अनदर एम्प्लॉय ब्लेक. ये भी उसी तरह से है. इसका एम्प्लॉय नंबर है 7698. मिस्टर किंग का एम्प्लॉय नंबर था 7839, बट इसका है 7698. इसका नाम है ब्लेक. ही इज अ मैनेजर. बट हियर द फोर्थ कॉलम, इससे पहले जो मिस्टर किंग था उसका मैनेजर कोई नहीं था. बट नाउ मिस्टर ब्लेक ही हैज अ बॉस and the ID of the boss is 7839. So who is his boss? His boss is Mr. King. यानी मिस्टर ब्लेक का बॉस है मिस्टर किंग. सो इन दिस मैनेजर कॉलम, इससे पहले खाली था,
Now here it will contain Mr. King का employment ID, that is 7839. एंड अगेन हायर रेट इसका क्या है, वो ये है, वो जिससे इससे पहले दिखाया था। इसकी सैलरी कितनी है, इतना, इसका कमीशन कितना है, इसका डिपार्टमेंट नंबर इट इज नाउ 30। ठीक है, नाउ वी विल रन दिस। one row has been inserted. Now if we run this select star from EMP query, it will have now 2 rows. Now first is Mr. इससे पहले था Mr. King, and now we have the second row inserted, that is Mr. Blake. और मिस्टर किंग और मिस्टर ब्लेक में एक बड़ी फर्क ये है कि मिस्टर किंग का कोई भी मैनेजर नहीं था और मिस्टर ब्लेक का एक मैनेजर है। सॉरी, कॉल अगेन। किंग भी हो गया, ये भी हो गया, ब्लेक भी हो गया। वी विल एंटर वन मोर एम्प्लॉय कॉल्ड मुस्तान। Okay, the name of the employee is Clark. His ID is 7782 and manager 7839 इसका मैनेजर है। सो इसका मैनेजर है मिस्टर किंग। अगेन इसका डेट इस तरह से एंड इसका इतना और ये राइट। इट इज सिंपली जिस तरह से पहले किया था। सो दिस ये भी रन किया एंड लेट अस एंटर वन मोर मिस्टर जोन्स। सो रन। इसी तरह मिस्टर स्कॉट run. If you see here now, Mr. Scott, can you spot some difference here in the previous query and Mr. Scott's query? इसमें RR है और डेट RR में, है और कुछ है और एम्प्लॉय मैनेजर आईडी दूसरी है। बेशक है जुलाई लिखित शुद्ध बीच -85 -85। This is an interesting field and Mr. ये जो है इसका पूरा मैं रन करूँ। If we select data, select star from EMP and we'll see this code here. इसका डेटा इंसर्ट क्या हुआ। मिस्टर क्लार्क, इसका हायर डेट लिखा है 9 जून 1981। हमने यहाँ इंसर्ट क्या किया था 13 जुलाई 1987। So what do you think happened? No, Scott's sorry. Yes, Scott. Here, Scott ये है ये। So this is Scott. इसका हमने हायर डेट एंटर किया था सिस्टम में 13 जुलाई 1987, बट इसका हायर डेट यहाँ पे आ रहा है 19 अप्रैल 1987। And somebody say ये क्या हो गया। इसमें क्या हो गया कि जो ये डेट है इसने कन्वर्ट किया है इसको सही, उसमें -85 डेज कर दिया। इस डेट को 85 डेज माइनस किए एंड दैट इट बिकेम्स 19 अप्रैल 1987। ठीक है। व्हाट इज दिस आरआर? दो डिजिट फॉर्मेट में है ना यहाँ पे 87। सो हमने इससे पहले YY 4 डिजिट फॉर्मेट में 2 डिजिट में लिखना पड़ता है ऐसे आरआर। ठीक है। सो दिस वाज इट। और बेशक का फोर्ड, स्मिथ, एलन, वार्ड, मार्टिन, टर्नर, एडम्स, मिलर वगैरह वगैरह। तो फिलहाल इतना करते हैं। यू प्रैक्टिस ऑन दीज। टुमारो वी विल हैव सम क्वेरीज। कल हम इस पर ये वाली क्वेरीज करते हैं, सिलेक्ट स्टार वाली। एंड आज के लिए इतना काफी। यू क्रिएट दिस टेबल्स, यू राइट, यू सी दिस ट्यूटोरियल एंड विल मैनेज द क्वेरीज ऑन दिस टेबल टुमारो। कोई सवाल? अरे सर, और मंथ के साथ भी हो सकता है, ईयर के साथ भी हो सकता है जो नहीं, माइनस आरआर सिर्फ ईयर के साथ होता है। आरआर ईयर के साथ होता है। जी हाँ।
ठीक है, और कोई सवाल? चलिए, थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं इंशाल्लाह क्लास में। अस्सलाम वालेकुम।